I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on iterative methods, indirect methods, Jacobi's method. Of Mathematics paper 3rd for the students of BA, BSC, 4th SEM, 2nd year. The book Programming in C and Numerical Methods. Jacobi's method is used for solving simultaneous linear algebraic equations. This iterative method is applicable only when each equation of the system contains one coefficient much larger than the other in that equation. कब अप्लाई करते हैं? दिस iteration method is applicable only when each equation of the system contains one coefficient much larger than the other in that equation, and that the larger coefficients in different equations correspond to different unknowns. Let the system of three non-homogeneous linear equations in three variables be a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 equal to b3. This is set number 1. Let us assume that a11, a12, a22, a33 ये जो diagonal हैं a11, a22, a33 with the largest coefficients in the first, second and third equations of the system 1, third equation of 1. Then on solving for x1, x2, x3, the system of equation 1 can be written as x1 equal to 1 divided by a11, b1 minus a12, x2 minus a13, x3, and x2 equal 1 divided by a22, b2 minus a21, x1 minus a23, x3, and x3 equal 1 divided by a33, b3 minus a31, x1 minus a32, x2. Second, for the first iteration, let the initial approximations be x1 equal to x10, x2 equal to x20, and x3 equal to x30. For the first iteration, let the initial approximations be x1 equal to x10, x2 equal to
x2 0 and x3 equal to x3 0. Substituting these values on right sides of equation second. For the first iteration, let the initial approximations be x equal to x1 equal to x1 0, x2 equal to x2 0, and x3 equal to x3 0. Substituting these values on right side of equation 1 of equation second, we have x1 bracket 1 first iteration equal 1 by a11 b1 minus a12, ये जो x2 था ना x2 0 हो गया माइनस a13 x3 0, ठीक। x2 ब्रैकेट 1 क्या हो गया 1 डिवाइड बटे a22 1 डिवाइड बटे a22 b2 माइनस a21 x1 0 माइनस a23 x3 0 1 डिवाइड बटे a22 b2 माइनस a21 x1 0 माइनस a23 x3 0। x1 की जगह x1 0 करना है अपने, x3 की जगह x3 0 करना है। Let the initial approximation be x1 equal to x1 0, x2 equal to x2 0, and x3 equal to x3 0. x3 bracket 1 first iteration 1 divided by a33 b3 minus a31 x1 0 minus a32 x2 0. For the second iteration, on substituting the value of x1 bracket 1, x2 bracket 1, x3 bracket 1 on the right sides of equation 2, we have x1 bracket 2 is equal to 1 divided by a11 b1 minus a12 x2 bracket 1 minus a13 x3 bracket 1 x2 bracket 2 equal to 1 divided by a22 b2 minus a21 x1 bracket 1 minus a23 x3 bracket 1 x3 bracket 2 equal to 1 divided by a33 b3 minus a31 x1 bracket 1 minus a32 x2 bracket 1 फोर्थ है, ठीक। For the second iteration, on substituting the value of x1 bracket 1, x2 bracket 1, x3 bracket 1 on the right sides of equation 2, we have x1 bracket 2 is equal to 1 divided by a11 b1 minus a12 x2 bracket 1 minus a13 x3 bracket 1। जब वैल्यू आई है ये वैल्यूज आप राइट हैंड साइड में फिट करते हो आप, ठीक। x1 ब्रैकेट 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a11 b1 माइनस a12 x2 ब्रैकेट 1 माइनस a13 x3 ब्रैकेट 1 और x2 ब्रैकेट 2 सेकेंड आइटरेशन
1 divided by a2 2 b2 minus a2 1 x1 ब्रैकेट 1 माइनस a2 3 x3 ब्रैकेट 1। ठीक। और x3 ब्रैकेट 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a3 3 b3 माइनस a3 1 x1 ब्रैकेट 1 माइनस a3 2 x2 ब्रैकेट 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट। अब क्या करना हमने, सिमिलरली फॉर द थर्ड आइट्रेशन वी हैव, जब सेकेंड आइट्रेशन आई ना इसमें वैल्यू पुट करते हो x1 ब्रैकेट 3 1 डिवाइड बाई a11 b1 माइनस a12 x2 ब्रैकेट 3 x2 ब्रैकेट 2, जो दो सेकेंड आइट्रेशन थर्ड में पुट कर, थर्ड निकालने के लिए यहाँ सेकेंड आइट्रेशन पुट कर दी, माइनस a13 x3 ब्रैकेट 2 x2 ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a22 b2 माइनस a21 x1 ब्रैकेट 1 माइनस a23 x3 ब्रैकेट 2 a x3 ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a2 3 b3 माइनस a31 x1 ब्रैकेट 2 आना था, ये गलत लिख दिया सर, माइनस a32 x2 ब्रैकेट 2। ये जो x2 ब्रैकेट 3 है ना, ये a21 x1 ब्रैकेट 2 आना चाहिए। The process is repeated till the values of x1 x2 x3 are obtained to the desired degree of accuracy। ये प्रोसेस आप चलाते जाओ, जैकोबीज मेथड है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 आर ऑब्टेन्ड टू द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक। अब एग्जाम्पल करते हैं इसका। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबीज आइट्रेशन मेथड। 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। देखो, एक बड़ा है, लार्जर है कोफिशेंट, एक है, एक 20 है। 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18। 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। तो ये कहाँ रहा है, MDU 2017-16 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 17-9। सॉल्यूशन कैसे होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 20। Here the coefficients of x, y and z in the first, second and third equations of set 1 are larger than the coefficients of other variables। कहता है here the coefficients of x, y and z in the first में x, second में y, थर्ड में z in the first, second and third equations of 1 are larger than the coefficients of other variables। जो other variables हैं y और z उससे larger हैं in the respective equations, उस equation में। hence we can solve these equation by Jacobi's iteration method, solving each equation for the unknowns having the larger coefficient। Solving each equation for the unknowns, उन unknown के लिए having the larger coefficients भी है। देखो, पहली इक्वेशन में x का लार्जर कोफिशेंट है, बाकी राइट हैंड साइड में भेज दो।
तो x इक्वल टू सॉल्व करो, सॉल्विंग ईच इक्वेशन फॉर द अननोन्स, उन अननोन के लिए हैविंग द लार्जर कोफिशेंट। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x जो उसका लार्जर कोफिशेंट है, तो 1/20 17 माइनस बाई प्लस 2z। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड में y की कोफिशेंट लार्जर है, तो y इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। और तीसरी इक्वेशन में 20z ये लार्जर है, तो z इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस बी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। Substituting these values on right hand side of equation second, we have x bracket 1 17/20 x y z 0 पुट करें अपन, तो 17 ही रह गया एक, इक्वल टू 0.85 y bracket 1। Simple calculator is allowed. You will when go to examination, you will accompany simple calculator with you। तो y ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू माइनस 18y 20 x और z 0 हो गया 0.9 x ब्रैकेट z ब्रैकेट 1 25/20 1.25 है। ठीक, सेकेंड आइट्रेशन के लिए क्या करना हमने, फॉर द सेकेंड आइट्रेशन ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, जो फर्स्ट आइट्रेशन है ना इसमें पुट कर दो x ब्रैकेट 1 y ब्रैकेट 1 एंड z ब्रैकेट 1 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। वी हैव x ब्रैकेट 2 इक्वल टू 1/20 17 माइनस x ब्रैकेट 1, जहाँ x था ना वहाँ जैसे y है तो y ब्रैकेट 1 0.9 आया माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू z ब्रैकेट 1, ये z ब्रैकेट 1 क्या 1.25, इसको सॉल्व करोगे 1.02 आ गया। इसी तरह y ब्रैकेट 2 1/20 माइनस 18, तो है ये माइनस 3 इंटू x की जगह x ब्रैकेट 1 तो 0.85 प्लस z क्या माइनस 1.25 इज इक्वल टू माइनस 0.965। इसी तरह z ब्रैकेट 2 सेकेंड आइट्रेशन 1/20 माइनस 2 इंटू x क्या आया है 0.85 प्लस 3 इंटू y ब्रैकेट 1 क्या है माइनस 0.9, ये 1.03 आ गया। तो ये सेकेंड आइट्रेशन आ गई। थर्ड आइट्रेशन के लिए सेकेंड आइट्रेशन यहाँ पुट करते हो 17 माइनस 0 माइनस बाई है ना बाई ब्रैकेट 2 माइनस 0.965 प्लस 2 इंटू x ब्रैकेट 2 1.03, ये आ गया 1.00125। y ब्रैकेट 3 इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3, ये था x 1.02 x ब्रैकेट 2 प्लस z ब्रैकेट 2 वो क्या है 1.03 इक्वल माइनस
1.0015, जेड ब्रैकेट 3 इसी तरह निकाल लिया 1.00325। फोर्थ आइट्रेशन, थर्ड को यूज करो फोर्थ में, यहाँ भी थर्ड थी ना उसमें, तो एक्स ब्रैकेट 4 1/20 तो एज इट इज रहेगा 17 माइनस 1 पॉइंट वाई है, वाई ब्रैकेट 2 कैली कार्ड के लिए -1.0015 प्लस 2 और एक्स क्या आपका एक्स ब्रैकेट 2 1.00325 और ये आ गया 1.004। वाई ब्रैकेट 4 फोर्थ आइट्रेशन 1/20 -18 -3 एक्स ब्रैकेट 3 तो 1.00125 प्लस जेड ब्रैकेट 3 क्या है 1.00325, इसको सिंप्लीफाई किया -1.4025 है। जेड ब्रैकेट 4 इसी तरह ये 0.9965 आ गया। फिफ्थ आइट्रेशन on substituting the values of x bracket 4, y bracket 4, z bracket 4 on the right hand side of equation second equation, तो ये 0.99966 y bracket 5 minus 1.000078 z bracket 3 0.99956। इसी तरह भी फॉर द सिक्स आइट्रेशन on substituting values of x bracket 5, y bracket 5, z bracket 5 on right hand side of equation number 2, तो ये 1.0000 y bracket 2 equal to -0.999997 और z ब्रैकेट 2 इक्वल टू 0.999992। तो क्या हो गया ये the values to the in the fifth and sixth iterations are almost same। जब सेम आनी शुरू हो जाए ना, as they differ by a small quantity, hence we can stop the iteration process and the solution of the given system of equations is x equal to 1 ले सकते हैं इसको, y equal to -1, z equal to 1। ठीक है, पॉइंट वो लिया था ना 1 ले लो, दिस ये 1 है, x तो आपका 1 पॉइंट और y आपका -0.999 है, तो -0.1 ले लिया और ये +1 ले लिया z। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय जैकोबी मेथड। 10 है ये, लार्जेस्ट 10 10 10। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस। Here the coefficients of x, y and z in the first, second and third equation of 1 are larger than the coefficients of other variables in their respective equations. Hence we can solve these equations by Jacobi's iteration method। तो पहले मैं x निकाल लूँ, पहले फर्स्ट का फर्स्ट, दूसरे में y निकालो लार्जेस्ट वाला 1/10 51 - 2x - z, और थर्ड में z इक्वल टू 1/10 61 - x - 2y, इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
For the first approximation, let the initial approximation be x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. Substituting these values on right hand side of second, we have x bracket 1 4.4, fy bracket 1 5.1, z bracket 1 6.1. और सेकेंड आइट्रेशन पुट कर रही है x ब्रैकेट 1 y ब्रैकेट 1 इसमें 44 माइनस y क्या है 5.1 माइनस 2 x क्या आपका 4x है आपका x ब्रैकेट 1 z है माइनस 2 z आपका 6.1 तो 2.67. इसी तरह y ब्रैकेट 2 एक उठे 10 51 माइनस 2 इंटू 4.4 माइनस 6.1 2 इंटू x 4.4 माइनस z 6.1 तो 3.61. z ब्रैकेट 2 इक्वल टू एक उठे 10 61 माइनस x 4.4 माइनस 2 y क्या आपका 5.1 तो 4.64. ये x ब्रैकेट 2 आ गया y ब्रैकेट 2 z ब्रैकेट 2. फॉर थर्ड आइट्रेशन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x ब्रैकेट 2 y ब्रैकेट 2 z ब्रैकेट 2 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए तो x ब्रैकेट 3 3.111 x y ब्रैकेट 3 इक्वल टू 4.102 x z ब्रैकेट 3 इक्वल टू 5.111. For fourth iteration on substituting the values of x bracket 3 y bracket 3 z bracket 3 on right hand side of equation second तो x ब्रैकेट 4 और एक उठे 10 44 माइनस y ब्रैकेट 3 4.102 माइनस 2 टाइम z ब्रैकेट 3 5.111 तो ये कैलकुलेट होके 2.9676. इसी तरह y ब्रैकेट 4 एक उठे 10 51 माइनस 3.9667 z ब्रैकेट 4 पुट करो वैल्यूज 4.9685. फिफ्थ आइट्रेशन के लिए जो फोर्थ आई है ना इसमें पुट कर लो सेकंड सेट में इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें पुट करो तो 0.3.0096 4.0096 5.0099. इसी तरह 6 आइट्रेशन ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x ब्रैकेट 5 y ब्रैकेट 5 z ब्रैकेट 5 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव x ब्रैकेट 6 एक उठे 10 44 माइनस जो ये आया है y ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू x ब्रैकेट 5 तो 2.9971 ये 3 आ गया ये 4 आ गया y ब्रैकेट 6 3.9971 z ब्रैकेट 6 4.9971 ये 5 आ गया ये 4 आ गया ये 3 आ गया. The values in the fifth and sixth iterations are almost same as they differ by small quantity, hence we can stop the iteration process and the solution of the given system of solution is x equal to 3 y equal to 4 z equal to 5. ठीक है. तो नेक्स्ट मेथड है गॉस सीडल मेथड है गॉस साइडल. दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर जैकोबीज मेथड. जो जैकोबीज मेथड था ना उसमें इम्प्रूवमेंट कर रखा है. गॉस सीडल मेथड डिफर फ्रॉम जैकोबीज मेथड इन computing the iteration values by using previous
iterated value of at every step, as in Jacobi's method. Let the system of three non-homogeneous linear solutions in this variable with this. So students, this method, Gauss-Seidel method, we will do in the next lecture. Okay, and you can watch the present lecture on college website name www.bljscollege.com. There you can watch your channel YouTube of BLJ's College Tosan. Download from it this lecture. If there is any difficulty, any query or any question, you are most welcome. You may ask, and thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.